Welcome back to the next lecture. We'll be studying the rule of law now. So, essentially, the rule of law, the concept of rule of law was the no, the was the embryo of Mr. A.V. Dicey, right? So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले उनका नाम। A.V. डाइसी साहब ये लाए थे। A.V. डाइसी, ठीक है। A.V. डाइसी साहब ये लॉ लाए थे, पहली चीज। It is the foundational principle of democratic governance, which means that law is not an arbitrary power, but it is something which governs the society, right? It ensures that all individuals and institutions, including the government, are subject to and accountable under the publicly known laws applied equally and fairly eventually, right? So that's the scene. Rule of law is the principle that all individuals and entities, including the government, accountable under the law. Rule of law is the antithesis of tyranny and anarchy. ठीक है, एट दी एंड एडमिन लॉ का काम क्या है? टायरनी को कम करना और अनार्की को कम करना। तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट क्या है? रूल ऑफ लॉ। थ्री प्रिंसिपल्स है डाइसी के, एवी डाइसी के साहब के। थ्री प्रिंसिपल्स है जिसने पॉपुलराइज भी किया था इन सेम प्रिंसिपल्स को। पहला है सुप्रीमसी ऑफ लॉ। नो वन कैन बी पनिश्ड और डिप्राइव्ड ऑफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर अ क्लियर ब्रीच ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड बिफोर ऑर्डिनरी कोर्ट्स। ठीक है, क्लियर ब्रीच, क्लियर ब्रीच होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी चीज क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ पोजिशन और पावर इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड सब्जेक्ट टू इट इन द सेम वे। ठीक है, सब इक्वल है लॉ के सामने। थर्ड इज व्हाट? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अराइज फ्रॉम जुडिशियल डिसीजंस determining individual rights, emphasizing the judiciary as guardian of liberty, right? Yeah, that mere incorporation of law into a document like constitution is meaningless unless there is an institutions that guarantees them. There is no strict application of this particular prospect in India. So this is one thing, right? Eventually, the rule of law prevents the abuse of power, first of all. Secondly, it secures equality and fairness. Thirdly, it upholds liberty and justice. ये तीन चीजें हैं। It ensures a predictable legal environment necessary for both democratic governance and economic stability by ensuring government accountability, protecting human rights, and fostering public trust in institutions. तो ये सारे मैंने चीजें ना आपको कहीं ना कहीं जो हमने बेसिक्स पढ़े हैं एडमिन लॉ के वहां पे भी बताई थी। ठीक है। इन समरी द रूल ऑफ लॉ रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ लीगल ऑर्डर ओवर आर्बिट्ररी कमांड। ठीक है, आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी कमांड ना हो, इसलिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड द एसेंस ऑफ जस्टिस इटसेल्फ। तो आप ये कहीं पे भी लिख सकते हैं, आर्टिकल 14 के प्रोस्पेक्ट्स में लिख सकते हैं। एडमिन लॉ का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें भी इसकी चीजें लिख सकते हैं। केसेस कौन से? पहला तो हो गया केसवानंद भारती। ठीक है, केसवानंद भारती। इट एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मैं ना यहाँ बना देता हूँ केसेस के लिए ना। फर्स्ट इज व्हाट? द केसवानंद भारती केस। केसवानंद, केसवानंद भारती केस। सेकेंडली इट इज मेनका गांधी वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया। thirdly एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत। एडीएम जबलपुर का केस है वर्सेस शिवकांत शुक्ला, शुक्ला। फोर्थली इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। फिफ्थली सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है।
चलिए अब ये पांचों केस पढ़ते हैं पहले कि what is the application of these cases in rule of law. First, we have to study the ever essential case of Kesavananda Bharati versus State of Kerala. It established the basic structure doctrine. Basic structure doctrine आया. Right. The Supreme Court held that certain essentials, like the rule of law, are part of the basic structure of the Constitution and cannot be amended by the Parliament, securing judicial review and constitutional supremacy. Rule of law, basic structure के अंदर है. Then we have Maneka Gandhi case. The significance of this case under rule of law is that it expanded the scope of Article 21, which is right to life and personal liberty, holding that law must be fair, reasonable, and non-arbitrary. Right? Expanded Article 21. Right? It strengthened the relationship between 14, 19, and 21, which is the holy trifecta of Indian Constitution, especially fundamental rights. It emphasized the need for justice in all executive action. जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है इन ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, राइट. फोर्थली इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण. नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले एडीएम जबलपुर का हमें देखना है. इट रेज द क्वेश्चन ऑफ वेदर एनी रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट्स apart from Article 21. Majority upheld the state power during emergency, but famous dissent by Mr. H.R. Khanna affirmed that no government is above the law and individuals should not be deprived of liberty without due process. That is a very great saying, actually, कि after 20-30 years, the dissent of a particular case will become the law, right? So, this is the significance. It raised the question of whether any rule of law exists apart from Article 21. Majority upheld the state power during emergency, but the famous dissent by Justice H.R. Khanna, जो मैंने आपको भी बताया, affirmed that no government is above the law. Remember that. Right. This is basically the Jabalpur case is basically known as which case? The habeas corpus case as well. Right. Then we have Indira Gandhi versus Raj Narain. In this case, the court found that rule of law and equality before law are the part of the constitution's basic structure, and it reinforced accountability, including of the prime minister under the law. Prime minister is also accountable under law. ठीक है. Last, which we'll study, is Somraj versus State of Haryana. Significance is absence of arbitrary power is a core tenet of rule of law. The court held that all state authorities are bound to follow legal rules and cannot act arbitrarily. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, या इस कोड को आप कहीं पर भी लिख सकते हैं. Absence of arbitrary power is the core tenet of rule of law. Of rule of law. Right. So these are a few cases. DC Vadva versus State of Bihar is also an important case in which the court held that repeated re-promulgation of ordinances by the executive was unconstitutional, क्योंकि गवर्नर ना बहुत सारे ordinances को regularly लाया जा रहा था, right? As it bypassed the legislature and violated the principle of rule of law and separation of powers. गवर्नर जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे separation of power का concept भी हमें लिखना पड़ेगा. So this is in respect to rule of law. I hope you like the video. Don't forget to like, share, and subscribe, and have a great day ahead. Bye.